So in the last class, we did first principle of differentiation. ठीक है? And I will not go into the derivation thing, how we got that expression of first principle of differentiation. I'll just write the result only. So if we have y is equal to f of x, if we have y is equal to f of x, and we want to find y dash or y prime, this is dy by dx, right? Which is limit h tends to 0, f of x plus h, f of x plus h minus f of x upon h. This is the first principle of differentiation, right? How to use it? Very simple. So I'll take the first question, second question of that day. So it was y is equal to x cube is what was the question which I gave. This was the question which I gave that day. So this is f of x. ठीक है? So what will be y dash for it? It will be limit h tends to 0. If this is y f of x, what will be f of x plus h? मिशिका, यस सर। तुम पिछली क्लास में नहीं थी तो सुनो ध्यान से। देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स तुमको समझ आता है कि नहीं आता है? दिस इज फंक्शन ऑफ x, सो दिस इज कॉल्ड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये समझ आता है कि नहीं? यस। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि x की वैल्यू को 2 रख देते, तो y जो होगा अब वो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 क्यूब। जहां जहां x है फंक्शन में, वहां x को 2 रख देंगे। समझ आया नहीं आया? आया सर। तो अगर x की वैल्यू को मैं r लिख देता हूँ, तो y क्या हो जाएगा? f ऑफ r हो जाएगा। और फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू हो जाएगी r की। हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर। अब अगर अगर मैं x की वैल्यू को, इफ आई राइट इट एज x प्लस एच, आई रिप्लेस x बाई x प्लस एच। ये कैंसिल मत करना, मैं सिर्फ इसको बोल रहा हूँ कि x बिकम्स x प्लस एच। ठीक है? तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा f ऑफ x प्लस एच। जैसे x 2 हुआ तो f ऑफ 2 हो गया, r हुआ तो f ऑफ r हो गया। सो f ऑफ x प्लस एच, दिस x प्लस एच बिकम्स f ऑफ x प्लस एच, राइट? y बिकम्स, यस और नो? यस। तो y की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी? इन प्लेस ऑफ x इन द इक्वेशन आई पुट x प्लस एच का होल क्यूब। क्लियर है ये? हाँ सर। तुमको a प्लस बी होल क्यूब का इक्वेशन का एक्सपेंशन पता है तुमको या नहीं पता है? नहीं सर। नहीं पता है, हाँ। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है? जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, वैसे ही ये भी होता है। ओके। ठीक है? तो ये ध्यान रखना। तो ये तुमको समझ में आया या नहीं आया, कैसे ये x प्लस एच हुआ है? आया सर। Good. So I hope all of you have understood this. Yes, anybody has having any doubt till this point in this concept? How to No, write sir. f of x plus h? No, Anyone is sir. having any doubts in this? No, sir. Good, good, No, sir. good. So now we have, in this case, x plus h is x plus h whole cube. ठीक है? अब आप लोग देखिए. So I'll put this in this equation now. The results. This is x plus h whole cube minus x cube upon h, right? This is equal to limit h tends to 0. X plus h whole cube is, I am using this formula, a plus b whole cube, which is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So I am using this formula here to expand this x plus h whole cube. So this is x cube plus h cube plus 3x square h plus 3x h square minus x cube upon h, right? Now, when you further solve it, this x cube minus x cube cancelled out, right? So the next step became, so the next step is y dash is now limit h tends to 0. It is h cube plus 3x square h plus 3x h square upon h. So now this h cancelled out with this h to give here square. Ye cancel hua. This is gone.
नाउ हाँ चलिए गई ख्याति. What do we do when from the denominator we have eliminated h? Now, what will be the next step, Khyati? Sir, 1 minute. Mm-hmm. So my internet was bad. Okay, no. So you want to answer this or you'll answer it later? Sir, I'll answer it. Okay. What was the question? The question is, if once we have eliminated h from the denominator, what do we do now? Sir, we write h plus 3x square plus 3x h. नहीं, after that. Sir, can I say? नहीं. Yes, Khyati. What is the next step? As soon as we have eliminated h from the denominator, what is the next step in process of differentiation? Sir, limit h tends to 0. Uh-huh. Um, So we will write h is equal to 0 wherever it is in the numerator. yes, sir. Understood? So we will substitute the value of h as 0 in the numerator. So the value becomes, यहाँ पे h will be 0 plus this becomes 3x square only because there is no h here, plus this becomes 0. So the final value is y dash is what? It is dy by dx, which is d of, what is y? D of x cube with respect to dx, right, is equal to 3x square. This is the way you should write it. I hope nobody is having any doubts in this. If anyone is having any doubts, please ask. Are there Sir? doubts? No, sir. Okay. Yes, Nila, बोलो. सर वो आइडेंटिटी में डाउट था सर क्या वो बोलो? जो आपने वो y प्राइम लिखा है ना सर, तो उसमें हम्म, हम x प्लस एच होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो हम ए हम्म. क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या? अरे जब प्लस लिखा है तो माइनस क्यों करेंगे उसमें? नहीं मतलब वो x प्लस एच को हम अगर a कंसिडर करेंगे और x उतना को, तुमको उतना बड़ा करना है तो कर लो, मैंने थोड़ी मना किया. ओके नहीं सर बस पूछ रहा था तो आइडेंटिटी। हाँ, तो वो उसमें तुम उतना जाओगे तो तुम पगला जाओगे, उसमें और बड़ा करोगे उसको, मैं बेवजह का काम. डेरिवेटिव एक्सपांड कर दूं? यस, यू कैन डू इट. एब्सोल्युटली. अगर इसको तुमने टी मान लिया तो टी क्यूब माइनस एक्स क्यूब का यू फॉर्मूला यू वांट टू यूज, यू कैन यूज इट. बट अगेन हाँ यू यूजलेस एफर्ट है. ठीक है, हाँ, कर आंसर सकते हैं. वही ही आएगा सर। ऑब्वियसली आंसर मैथ्स है ना. 1+1 हमेशा 2 ही होगा, 3 नहीं हो यस सकता. So this was the first question. This was the second question which we did. The first question was, I think, can anybody tell me what was the first question Sir, of that? I will tell. हाँ बोलो. Sir, Y is equal to 2x square plus 5. बस. Yes. अच्छा. विहान वर्मा, यस सर. बताओ क्या करोगे इसमें जल्दी से. सर पहले f इज अ फंक्शन ऑफ x प्लस एच y प्राइम. हम्म. So f of फिर x plus h. I will write f of x plus h. So what is that f यस of x plus h? बताओ. दैट विल बी 2 ब्रैकेट x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 5. Very good. So now what we do? What do we do here? Limit. दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 dx हम्म. अपॉन dy. वो तो हो गया. हाँ देन हाँ. f of x plus h x प्लस minus, h माइनस फंक्शन ऑफ x yes, अपॉन h. divided by h. Yeah. So this becomes now limit h tends to 0, f of x plus h, this value. So it is 2x plus 2x h whole plus square plus 5 plus 5 minus minus 2x square plus 5 2x square plus 5 divided by h. h. Then expand x plus h whole square. Okay. So this is 2x 2x square square plus plus h h square square plus plus 2xh 2xh plus plus 5 5 minus minus 2x 2x square square minus 5. plus 5, right? Y plus 5, this is minus. Break a bracket open करोगे तो Oh, मिलेगा. okay. Divided by h. So this cancelled out with this one. 5 Yes. goes off with 5 this. goes in. Then Then once, h is cancelled. We can multiply 2 with the bracket. एक स्टेप और लिख लो, नहीं तो जनता जो है वो जान खा जाएगी कहाँ से आया 4 पूछ plus पूछ के. 4xh So this 1. is this cancelled out. Cancelled This x. cancelled out. As soon as h is eliminated from the 0. denominator, what do we do? It becomes 0. नहीं It नहीं will रुको. become 0.
we have to substitute h as 0 in the numerator wherever it is, Yes. right? Yes. So from here we get y 2 dash into is 0. equal to 4x. Yes. This was the result of the first question. So we have discussed both the questions of homework from the previous session. And from now onwards, I'll give you some homework to use first principle of differentiation and solve the and do those questions. तो करेंगे, मैं बताऊंगा तुमको आज for this week homework for Saturday's session, right? So now pay attention. Whatever expressions which we will be learning from now onwards in differentiation, all those expressions are derived from first principle of differentiation only. But we are not going to derive those expressions. We will simply use those expressions. Understood? So now we will learn differentiations of some basic functions. Okay? We are learning differentiation of some basic functions. Sir, there are 4, right? 4, 5, 5. Five. So differentiation of some basic functions. So please pay attention. Don't get diverted. Focus यहीं रहना चाहिए. Don't start writing. You'll have enough time to write this. Okay. So the first type of function is algebraic function. And this is, the function is y is equal to x to the power n. The function is y is equal to x to the power n, where this n is constant. The value of n is constant. So it can be anything, right? But it is a constant, right? So the differentiation of this function, that is y dash, is equal to, the result is like this, n x to the power n minus 1. N x to the power n minus 1. I'll apply this in an example. So I have this example. Y is equal to x to the power minus 3 by 2. Right? So this is y dash is equal to, what do we have as n here? All of you, what do we have as Minus n 3 here? by 2. by 2. Yes, very good. So this is our n, right? So the result will be n. In place of n, substitute minus 3 by 2. X to the power minus 3 by 2 minus 1. So the result is minus 3 by 2 x to the power minus 5 by 2. This is y dash. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes, Any sir. doubts? Any No, doubts? sir. No, sir. Yes, No, please sir. ask. Anyone said the doubts? Hai? Someone said there are doubts. Sir, Adya, can you Pranav, explain the example again? you're Anya, right? Yes, sir. What happened to your camera, Anya? Sir, I'm in phone right now. That's why I'm not Okay. switching on. So what do we have as n here, Anya? The expression is x to the power minus 3 by 2. You have learned these type of indices or not? How does indices work? Yes, पढ़ा है sir. बेटा? हाँ? हाँ. आता है ना पढ़ ये तुमको कि नहीं आता है? Yes, sir. आता है. x to the power a multiplied by x to the power b क्या होता है? x to the power a plus b. A ये मालूम plus है कि B. नहीं मालूम है? Yes, sir. हाँ, पता है. वेरी गुड. हाँ, तो फिर ठीक है, फिर तो सब करना है. तो x to the power minus 3 by 2 है. तो n की जगह पे क्या आया यहाँ पे? देखो, यहाँ से कंपेयर करके देखो क्या आया n की जगह पे. -3/2 अब उसको जहां x. जहां n है वहां वहां रखें. सर लेकिन फिर आपने पावर में -1 क्यों लिखा है? वो तो लिखा हुआ है ना, रिजल्ट में है ना, पावर में -1. ये जो है, ये रिजल्ट में -1 है कि नहीं है? ओ ओके सर.
ठीक है, जो है वो यूज करेंगे ना। अंडरस्टूड? ठीक। Yes, sir. टेक वन मोर एग्जांपल. वी हैव y is equal to x to the power cube plus x square plus 2x plus 1. ठीक है. अच्छा नहीं, अभी मत करो इसको, नहीं तो गड़बड़ होगी. लेट्स डू दिस वन. 1 upon x, right? So we have the function as 1 upon x. We want to find y dash. So yes, we have. बोलो. Sir, can I solve this one? हाँ बोलो. So sorry, y equals to 1 upon x, that is nothing but x raised to the power minus 1. Okay. So according to the algebraic function आ गए. formula, हाँ हाँ y prime is equal to हाँ. uh, minus x, -1 into. minus 1 into x, which is minus 1 minus 1. Okay. So that's equal to minus x. Yes, So minus this is x raised -1 to the power upon minus x 2. square. Yeah. So this is the expression. I hope all of very good. All of you, I hope all of you were able to understand this. You got it? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट नहीं है ना किसी को इसमें? No, sir. Good. So so this is for all of you. Don't tell the answer. You have to send me answer in the personal chat, right? Send it to me only. So this is example, and all of you have to solve this one. ठीक है? Solve this, use this formula, and send the result in the chat window. सर बोलो. सर वो जो आपने वो क्वेश्चन के ऊपर के नोट्स दिए वो लिखना है क्या अभी? नहीं, पहले सॉल्व कर. ठीक. विहान वर्मा, ये कि तुमने सॉल्यूशन भेजा है, मुझे आंसर भेजा है? Yes, sir. जगन्नाथ जितेश, this is the answer you have sent me. Yes, sir. Please check again. All both of you do it again. Sir, Anvi, is very good. my correct? देख रहा हूँ बेटा. Wrong. Once and if you have done it, Vihan, wrong. Sir, is mine correct? Wrong.
Sir, So- is mine correct? I'm checking. Adya wrong, Pranav wrong. सर नीलाभ गलत है। तुम लोग को सॉल्व ये बेसिक मनोगना आंसर्स, मिशिका, ख्याति आंसर्स बेटा। Sir, I sent, sir. ओके ख्याति योर आंसर। Sir, I ईशान sent. यू सेंड। Yes, sir. ईशान योर आंसर इज करेक्ट। मनोगना सर योर मेरा भी आंसर इज सेम आया करेक्ट। गलत है सर। तुम्हारा आंसर। वो मैंने सर सिंपलीफाई किया सर गलत इंडेक्स है को तुम्हारा आंसर। गलत है बेटा। ख्याति तो रॉन्ग आंसर। तो सर पावर अगर नेगेटिव हो तो वही छोड़ देने अरे का क्या? भाई फिर तुम नहीं बेटा, गलत है तुम्हारा आंसर। मैं ओके पावर के उस पे बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। ओके ओके। हाँ तुम चेक करो ना उसको। चेक क्यों नहीं करना चाहते? तुमने लिख दिया ब्रह्म वाक्य हो गया। चेक करो उसको। हाँ सर कर फिर दो। आन्या वेरी गुड। ये धीरेन्द्र रेड्डी कहाँ है? ये नहीं आया ना फिर से। यार ये बच्चे लोग ना एक दिन आएंगे, दो दिन नहीं। Sir, I also wrote -1/x only. तो गलत लिखा है ना। तो आपने आद्या को करेक्ट बोला। हाँ मेरा मन हुआ उसको बोलने। उसने भी माइनस। तो क्या हुआ? मेरा मन था ना उसको बोलने का। सही सर किया उसको। आपने आद्या को बोला या आन्या को? अरे रुक जाओ तुम लोग, रुको। ये बोला वो बोला, रुको। एक अभी एक सर, बंदा गायब है हम उसको। दोनों आंसर सेम है हमारे। हाँ ठीक है ना। तो मेरा कैसे फाउंडेशन। रखा? कौन बच्चा नहीं आया है आज? ईशा वेर इज योर आंसर? प्रणव Sir, I sent. यू सेंड। ये जब मिस्टर जगन्नाथ वेर इज योर आंसर? Yes, sir, I sent it now, just now. ओके Oh, sir, please wait 1 more second. I'm giving another one. हम्म चलो देखो इधर। y can be written as x to the power -1/2, right? So in place of n it is -1/2, so y prime is equal to -1/2 x to the power -1 -1 -1/2 -1. This goes in the exponent, right? So this is -1/2 -1. मिशिका समझ आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? हाँ This is -3/2. This is y prime. I hope all of you understood this. Sir, yes. Hmm. can you tell it again? Here, how 1/√x became x अच्छा power x to the -1/2? how did this, you understood this one, the second question, this one? Yes, sir. You understood this? Why 1/x became x to the power -1? Inverse. Similar here, na? This is 1 upon x to the power 1/2. Understood or not? This is 1 upon x to the power 1/2. Adya, yes or no? Oh, sir. Now you understood or not?
Hmm. How? You are asking me how, or you understood this? How, sir? Arey, what is root x? Root x is x to the power 1 by 2. You are aware of this or not? I don't know, sir. This is square root of x. You know root or not? You know this root? Yes, sir. So root is x to the, this is how root is written. X to the Hmm. power 1 by 2, right? Remember, root x is x to Okay, the sir. power 1 by 2. Hmm. Cube root of x is, this is how we write cube root also. Hmm. Cube root of x is x to the power 1 by 3. Understood? Yes, sir. Fifth root of x is x to the power 1 by 5. Okay, Got sir. it? Simple. Now, if it is 1 upon root x, it will be x to the power minus 1 by 2. Understood? Yes, sir. So that's why I wrote this as x to the power minus 1. I hope this is correct. This is, you understood this. Ishan, understood? Sir, हाँ बोलो. if I get minus 1 by root x square, so that is also not correct. Wrong. Sir, Not because correct का सवाल ही नहीं उठता, वो wrong है, wrong. मतलब रूट एक्स को मैंने ऊपर लिया लेकिन उसको मैंने एक्स इज एक्स रेज टू 1/2 नहीं लिखा, रूट एक्स लिखा। हाँ, फिर मैंने उसको पावर फिर -1 हो गया ना, कैसे -1 हो? रूट एक्स का क्योंकि पावर -1 हो जाएगा. नहीं, रूट एक्स रेज टू -1 किया मैंने हाँ मैंने ऐसा इनवर्स लिया हाँ तो हाँ, तो हाँ, फिर मैंने मतलब देखो -1। ये क्या बोल रही है, सुनो सब लोग सुनो. हाँ, ये लिखा तुमने, फिर हाँ, फिर मैंने -1 इंटू रूट एक्स रेज टू हाँ, -1 लिया। मतलब दिमाग कहाँ चला गया है? ये किसने सिखा दिया ये मैथमेटिकल ऑपरेशन? बेटा ये नहीं करते इसमें ऐसे. है रूट, ये इसको पहले रूट को एक्सप्रेशन में लिखेंगे, हम इसको इंडेक्स में बनाएंगे, इंडाइसिस बनाएंगे इसका. समझ आया? ओह, हाँ, अभी तो ऐसा कर ही नहीं सकते हम। तुम्हारे बस चले तो फिर तो तुम इसको उल्टा लेटा हुआ एट बोलने लगो इन्फिनिटी को कल से. ये एट नहीं लेट सर, गया है बोलोगी, है ना? एट लेट गया नहीं है सर। कि नहीं? है ना? या स्लीपिंग एट बोलोगी इसको अंग्रेजी में, है कि नहीं? ऐसे नहीं करना है बेटा. हाँ सर। ठीक है. हाँ, ऑल ऑफ यू नोटेड दिस स्लाइड? ऑल ऑफ यू डन विद दिस स्लाइड? से यस और नो. हाँ सर। ईशान, यस Yes. शाबाश. Yes, sir. Yes, मनोगना, sir. यू अंडरस्टूड? मनोगना, प्रणव, नीलाभ, ख्याति. ख्याति समझ आया बेटा? ख्याति, Yes. Yes, sir. यू अंडरस्टूड व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यू? व्हाट वाज रॉन्ग इन योर अटेम्प्ट? Sir, okay. हाँ, Sir, I put 1 by x to the power 1 by 2. And I didn't know that I could make it x to the power 1 minus 1 by 2. okay, but now you understood, right, how to write this index? Yes. Hmm. Yes, sir. गुड गुड. Yes. देखो कुछ कुछ मुझे नहीं पता है कि छोटे बच्चों को कहाँ तक सर पढ़ाया ये है, तो लिखना एक है। ये लिखना है अभी. क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? लिखो जल्दी से इसको. 1 मिनट है तुम्हारे पास. जगन्नाथ, योर आंसर वाज करेक्ट. ख्याति, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट नाउ. वेरी गुड. सर, जो मैंने आपको बोला वो रूट एक्स को मैंने ऊपर लिया, वो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कभी तुमने जूते को सर पे पहनने की कोशिश की है? नहीं सर, क्यों नहीं पहन सकते? सर फिट नहीं होता है। हाँ, वो प्रोसेस नहीं है उसका ना, वो जगह नहीं है उसकी. और तो वैसे ही उसको इंडेक्स को यूज करने का वो तरीका नहीं है. सर, तो ठीक है. हाँ, हमेशा याद रखो, हर चीज को उपयोग करने का, हर एक्सप्रेशन को यूज करने की अपनी एक जगह होगी, एक प्रोसेस होगा. हम उसको उसी में डालेंगे, है ना? अभी हाँ देखो सर। तुम्हारे साथ अभी बहुत सारा लिमिटेशन है. मैथ्स को इसीलिए फिलोसफी की तरह भी पढ़ा जाता है कि क्यों नहीं कर सकते, क्यों एक्स 1 + 1 2 ही हुआ, क्यों 4 नहीं हो गया. तो उस पर कहानी लिखती है जनता. हमें, हमारे पास उतना टाइम नहीं, अनफॉर्चुनेट. तो वो जब जिस दिन तुम मैथ्स में
फिलोसफी करोगी, जिस दिन तुम एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स पढ़ने लगोगी उस दिन कहानी अलग होगी तुम्हारी, सब इस पे पंचायत करेंगे। ठीक है, चलो, anyway, so we are moving ahead now. This was the first function and this is the most important one also. Now always remember, always remember, differentiation of a constant, differentiation of a constant is always equal to 0. ठीक है, is always equal to 0. Why so? Why so? So we have y is equal to 2. All of you, please pay attention. Please pay attention. Don't write. This is the proof of it. If y is equal to 2, right? This is a constant, right? Now, what is y prime? Y prime is limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कृषा, लिख मत, सुन। मैं बताऊंगा नहीं, कोई डाउट तेरा, सर लिखा नहीं है मैंने अभी तक। मुंह बंद। तू लिख रही है, मुझे सब पता है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स है। इफ वाई इज कांस्टेंट, ख्याति नहीं, ख्याति नहीं, ख्याति से पूछा है मैंने यार, एक सेकंड रुको। प्रणव, if y is a constant, what will be delta y, Pranav? Pranav, Yes, sir. if y is a constant, y is 2, what will be delta y? Pranav, Yes, sir. I am asking you a question. Answer it. Okay, sir. If y is a constant, what is change in y? So the small change in y. So what will it change? If it's a constant, can it change? No, sir. It's If 2. Sir, can I tell? change, The change, constant will remain. change. Sir, can I tell? रुको 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 रुको, मुझे पूछने दो जिससे मुझे पूछना है। ईशा, tell me what is delta y? If Sir? y is a constant, अरे Yes. रुक जाओ यार, रुको मत करो टक टक। I'll disable this feature. Don't do this. Don't raise your hand. I'll ask you if I have to ask. Wait. हाँ. Yes. Isha. Sir, sir, 1 minute. Isha, apply your head now. Don't. You need not have to look it into notebook. There is Okay. nothing in your notebook. If y is a constant, y is 2, right? Yes, sir. Will it change? What is delta y, Isha? What does that delta represents, Isha? Area. You didn't revise. No, sir, I couldn't resolve. Why? I had test. Are it will take you 5 minutes before joining for the session. You can go and check. Delta is Adya. What is delta? Delta means the change. Change, right? Delta Yes, means the sir. change. Mr. Jagannath, tell me what is delta y? Sir, 0. Very good. It's 0. Why it's 0? Because Sir, it y, is a since constant and it if will it's a not constant, it impact will not change. Simple, right? If it's a constant, it will not change. So this thing becomes limit delta x tends to 0. Delta y is 0 upon delta x. Yes or no? All of you. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे Yes, sir. in this fraction, the numerator is 0. The denominator is something which we are not aware of. क्या है हमें नहीं पता. But in the fraction, whenever there is 0 in the numerator, then this becomes what? This is 0. होता है ना, 0 upon 5 is what? 0. 0 upon 8 is what? 0. You know this or not? All of you. Yes, sir. Sir. Yes, sir. So this proves that differentiation of a constant is 0, right? This proves that differentiation of a constant is 0. Always remember this, right? Now, Sir, हाँ,
Sir, how delta y is 0? I wrote y2 minus y1, so 2 अरे भाई minus चेंज 2 जीरो, 0. हाँ बस, हाँ ठीक है, वही. हाँ हाँ वही मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया तुम्हारे पास, क्या पढ़ाने जा रहा था मुझे, ठीक है। तो इफ y इज इक्वल टू से 2x³ फॉर एग्जाम्पल, if y is equal to 2x³ and now you want to differentiate y, right? What you will do here is, it is d upon dx of 2x³, right? So take 2 out from here, it becomes dy dx of x³. So whenever a constant is multiplied to some variable, always remember this. ये फिर चुपचाप लिखने लग गई, देखो इसको, अरे तुमको किस भाषा में समझाऊं, भगा दूं क्लास से बाहर में अभी, कृषा नथानी, भगा दूं क्लास के बाहर सर तुरंत। मैंने अभी नहीं लिखा सच में. सर मेरा पेज ही खत्म हो गया, मैं किधर लिखूं? मैं नहीं लिखा अभी. इधर सब ध्यान दो। So it is two times. So whenever a constant is multiplied to the function, what you do is you take out the constant and you have to only differentiate the function, right? Because here the constant is multiplied. Okay. So this will become 2. 2 will always be there. And now apply the formula for differentiation of an algebraic function like this. So this becomes now 3x squared. Because in place of n, we have 3. So it is nx to the power n minus 1. So this is 6x squared. This is y dash. I hope all of you understood this. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. Anyone is having any doubt? Sir, can you Copy repeat? this. I didn't understand. क्या 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 नहीं समझ में आया, बोलो। वो 2d/dx टू x. कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है ना, हाँ. टू कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड है, उसको बाहर कर दो, ओके. डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। हम्म. अगर अकेला 2 होता, इफ अलोन, if 2 is alone, then its differentiation will be 0. Yes. Clear? But if 2 is multiplied, if the constant is multiplied to some variable, we take the constant out and differentiate the variable part, Okay, sir. following the rules, whatever rules we have learned. Okay, sir. Understood? Yes, sir. Sukruta, you understood or not? Yes, sir, I understood. Okay. Manogna, Yes, sir. Anya, Pranav, you understood or not? Yes, sir, I understood. You understood what is change in y now? Yes, sir, I understood. I asked a simple question, you are not able to answer it. Why, Pranav? Sir, because You are traveling. No, sir. फिर? So while traveling, your mind has traveled out of its place. चलो, विहान समझ आया बेटा? Yes, sir. शाबाश। चलो लिखो इसको जल्दी से, all of you. Write it quickly. Sir, I have a doubt, sir. Yes, ask. Sir, in the other one, like in algebraic functions, in that one, x is constant, no, sir? No, n is constant. N is constant, not x. हाँ, check your notes ना. I wrote wrong. I was अरे, what are you doing? no, you wrote it like that, no, sir. So I N is constant. There n is Only n is n. constant. How x can be constant? X is differentiating. No? We are differentiating x. Okay, sir. 1 second. सर बोलो। सर ये भी डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक फंक्शंस में ही आता है ना? सब में आता, हाँ, बेसिक मतलब Okay. ये तो कुछ सर ऐसा टॉपिक क्या था मैं पूछ रहा हूँ। सर आपको 2d/dx इज इक्वल टू 3x² कैसे मिला? अरे 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x³ है भाई, वो x³ को यस सर. डिफरेंशिएट कर रहे हो ना तुम। यस सर. क्या वर्मा जी, x n की जगह पे क्या है, 3 है, फॉर्मूला यूज करिए ना, nx टू द पावर n माइनस 1। यस सर. तो क्या होगा ये, 3x टू द पावर 3 माइनस 1। आया समझ में? यस सर आया. फिर सर वो नीचे का dx किधर चला गया? अरे वो एक्सप्रेशन है भाई, ये लिखते हैं ना dy बाई डी एक्स हम लोग, अच्छा वो चला नहीं डेल्टा. जाता है, ऑपरेटर है वो।
ऑपरेटर है वो। 2+3 में पूछती हो क्या प्लस कहाँ चला गया? इसमें 5 लिखता हूं तो पूछती हो प्लस कहाँ चला गया? नहीं सर। फिर तो यहाँ भी मत पूछो d/dx का dx कहाँ चला गया। जल्दी, नोटेड ऑल ऑफ यू? No, sir, last line. सर 1 मिनट। हम्म चलो, बस इतना ही टाइम है मेरे पास, अब सुनो ध्यान से बाकी सब। तो द सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शंस आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक functions. These are, the first one in this is y is equal to sin x. If y is equal to sin x, then y prime will be cos x. That is, differentiation of sin x is cos x. If y is cos x, these you have to memorize. ठीक है? कहाँ से आया रिजल्ट? तो by the first principle of differentiation. Can we do it? No, we can't do it. We have to memorize it only. So these are trigonometric functions. Differentiation of sin x is cos x. Differentiation of cos x is minus sin x. Third one, there is this function called as exponential function, right? And here we use this Euler's constant E. ठीक है? कौन सा constant है ये? This is a constant in maths and its approximate value is 2.72. There is an entire series based on this that is called as Euler's series. तो ये एक Euler नाम का scientist था. So this is called as Euler's constant. मैं सही बोल रहा हूँ ना? यूलर्स कांस्टेंट ही बोलते हैं, मैं कैसे दिमाग में आया मेरे कि गलत हो सकता है ये? तो हाँ, ठीक बोल रहा हूँ। सो दिस इज यूलर्स कांस्टेंट। तो इसने सीरीज बना के दी पूरी एक, ठीक है? तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सीरीज एज ऑफ नाउ, बट द फंक्शन of e power x, we are interested in this. So y is equal to e to the power x. Differentiation of this is e power x 1. इसका डिफरेंशिएशन ये खुद होता है, nothing changes in it, right? This is the exponential function. The last one is a logarithmic function. Okay, the last one is a logarithmic function. You will have a separate lecture for log. Mr. HR Pathak will teach you this, but unfortunately his father passed away yesterday, so I'm not aware how much time he will take to join again. So, but we will discuss this. So you will just memorize this formula and use it, right? So if y is equal to, there is a function called as log. Log base, this is called as base, and this is x. So this is called as base. So when base is of e, that is Euler's constant, we call this function as log base x as log base x, right? This e is base. So we call this as natural log. We call this as natural log. How do we read this? Natural log. Okay. So natural log of x. So differentiation of this natural log of x is 1 upon x. So what is this? How did we get this? It is d by dx of ln of x. So that is 1 by x. Always remember this. Just memorize it. For the time being, you will get to know more about it later on. Okay. Please copy it quickly. Sir, Bolo. sir, in that log wala, how did that x go in the denominator? वो एक्सप्रेशन है, याद रखना। अच्छा। सर हाँ बोलो।
वो मुझे लॉग का समझ में नहीं आया सर, वो कुछ एल नहीं एन समझना एक्स। है, कुछ नहीं समझना है उसको। अगर ऐसा लिखा ओके। हुआ दिखाई दे तो ये एक मैथ्स का एक फंक्शन होता है जिसको हम लॉग बोलते हैं। हाँ इसके हाँ। बारे में आप और ज्यादा पढ़ेंगे मैथ्स की क्लास में, मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो ओके। बस इतना ध्यान रखना है, जो ये जहाँ लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ यहाँ पे ओके। लिखे हुए क्वांटिटी को बेस बोलते हैं। हाँ इसको हाँ। जब हम इसको पढ़ेंगे पूरे को तो इसको हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉग, और उसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। एक्स। ओके। सिंपल। ठीक है। ओके। हाँ, इसको ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। Sir, हाँ this calculus is physics or maths, sir? मैथ्स, Okay. वी आर लर्निंग बेसिक मैथ्स ना ईशा। Oh, Sir, I so this calculus is used where in physics? जब आएगा तब पता चले। ख्याति, vectors is also noted? maths, sir. Vector Yes, is sir. also maths. You understood, ख्याति? Yes, sir. Only Vihan? the logarithmic function, sir, I'm not understanding it. Everything else I understood. See, it's a simple, it's a function. Whenever a function is written like this, we call it as log function. Okay? Differentiation of ln of x. So someday, some 1 week before, you are not aware about sin x. So you are now aware that it's a trigonometric function. So there is a log function called as ln of x, right? This is called as natural log. इसका नाम है नेचुरल, राइट? तो y डैश क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ln of x with respect to x is 1/x. This is the result which you should remember. That's it. Memorize it. Sir, ठीक है? Okay, sir. Thank हम्म, Yes, sir. sir, vectors तो HC वर्मा के टेक्स्ट बुक मैं में तुमको भी था। जानता ही नहीं, कौन हो तुम? वेक्टर में पढ़ा ही नहीं रहा अभी, तो क्यों बात करनी है उसकी तुमको अभी? ऑल ऑफ यू नोटेड दिस? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड. So Sir, now लेकिन you have homework. Yes, sir. You have homework for, this was from basic maths booklet. नहीं, बेसिक मैथ्स नहीं, जनरल फिजिक्स था ये, सॉरी माय, जनरल थ्योरी था ना, जनरल थ्योरी। सर होमवर्क क्या है? अभी बता रहा हूँ, रुको एक सेकंड। कहाँ चला गया ये? एक मिनट रुको जरा, जनरल थ्योरी नाम है ना इस बुक का। जनरल थ्योरी प्लस एक्सरसाइजेज में, all of you, you have that booklet with you. If you don't have, I'll post it, the booklet in the group for the new students, right? sir, I Since did this, not get. अच्छा है, मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, all of you have to solve question number 1. No, Which please write booklet, down the sir? page number 39. I'll send you the booklet now. You already have that booklet with you, general theory plus exercises. The name of the booklet is general theory plus exercises. Page number 39. Page number 39. Question number 1. Page number 39. Question number 1. Only one, sir. Only one. Exercise 1. Question number 1. इसमें लिखा हुआ है find the first derivative and second derivative. So second derivative means you have to differentiate it again. So for example, suppose y is x cube. So the first derivative of y is dy by dx, which is 3x square. Second derivative is, this is how it is written. You have to differentiate this function again. So 3 is a constant, take it out. Now differentiate x square. Differentiation of x square is 2x. So this becomes 6x. So this is the first derivative. This is the second derivative. I hope you understood. Yes or no?
Yes. sir. Yes, sir. Second Yes, derivative sir. means you have to differentiate it again. Okay. The Send the only booklet first now. question. Sorry, Send the booklet now. you already have that book. सर वो Only बुकलेट these two कहाँ है? things. तुम दोनों के पास नहीं, मैं भेजता हूँ बुक, मैं भेज रहा हूँ इसमें group। मेरे पास भी नहीं है sir. Even अरे, for me. सबके पास है तुम लोग के। Sir, which page number? 39। Sir, बाय। ठीक है, होमवर्क इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जगन्नाथ, प्रणव, सुकृता, आन्या, मनोगना, Yes, sir. नीलाभ, आद्या, विशिका, विहान। Yes, विहान, sir. होमवर्क क्लियर है बेटा? Sir, Yes, question sir. सर ये कौन सी? भेजा मैंने बुक अभी ग्रुप में। ख्याति, हाँ, Yes, sir. होमवर्क इज क्लियर टू यू? Yes, sir. अनवी, Sir. Yes, sir. होमवर्क क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Sir, हाँ आद्या बोलो। will you send the booklet in the group? ऑलरेडी सेंड। Okay, sir. नीलाभ, यस होमवर्क सर। क्लियर है? हाँ, बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन 1 थे, पेज 39। बेसिक मैथ्स नहीं, जनरल थ्योरी जो मैंने अभी भेजा, उसका बुक का नाम है जनरल थ्योरी प्लस एक्सरसाइज। ओके, उसमें Sir, खुद के हाँ। नंबर आपको भेजूंगा तो चलेगा? क्या? मैं मेरे खुद के नंबर से आपको भेजूंगा तो चलेगा? हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। नाम लिख देना बस। हाँ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। sir, बाय doubt है How many मुझे. बाय। questions? आई डोंट Bye, नो। Sir, sir. Thank doubt you, sir. in Bye, that sir. second वाला